students, welcome to the next class. The name of chapter is the reaction mechanism of the transition metal complexes part 1. I am Sarang Dhote, Assistant Professor, Department of Chemistry, Sri Shivaji Science College, Nagpur. So today we are going to discuss the new chapter, that is reaction mechanism of the transition metal complexes. This chapter we are going to deal with some important factors like the various mechanism SN1, SN2 for the octahedral complexes. What is the meaning of inert and labile complexes? Look. So let's start with the first. What is the meaning of inert and labile complexes? A metal complex in which the rate of ligand displacement, here we are going to discuss the displacement reactions. The ligand displacement reaction is very fast and show the high reactivity is called the labile complexes. And this property is known as the labile. Whereas on the other hand, the metal complexes in which the rate of ligand displacement is very slow and show the less reactivity is called the inert complexes, and this property is known as the inert phase. So thermodynamic stability versus kinetic stability, here we discuss. The thermodynamic stability depends upon the energy difference between the reactant and the product. If the product having the less energy than that of the reactant, then it will be more stable than the reactant. Remember this. So suppose product की energy अगर कम होगी as compared to reactant, then the product will be more stable than the reactant. The kinetic stability, the complex depend upon the activation energy. This is the important. If activation energy barrier is very low, what is the meaning of activation energy? We know that this type of graph is the activation energy. This one is the activation energy. If suppose activation energy is very low, then the reaction will take place at a higher speed. This type of complexes are called kinetically unstable. Remember this. Okay? Thermodynamic stability and the kinetic stability are not related to each other. It may be a opposite. So that the complexes having the less barrier of activation energy that takes place at a higher speed. This type of reaction, this type of reaction mechanism is kinetically unstable, and whereas the complex will be the labile. Because very fast reaction, displacement, so that is labile. If the activation energy barrier is high, the activation energy is very high, the substance will react with the slowly and will be called as kinetically stabilized or this is the kinetically stabilized and inert. Now there is no correlation between the thermodynamic and kinetic stability. Kinetic stable products may be a labile or inert and vice versa. Remember this thing. Okay. Those products are kinetically highly stable, but it may be a labile in terms of the kinetic stability, or it may be inert. So that there is no relation between the kinetic stability and the thermodynamic stability. Now this is the graph. This is the known as the energy of activation. This is the enthalpy. In this case, the product having the less energy as compared to the reactant. So that according to thermodynamics, this is the very stable. Stable product is there. If suppose the product having higher energy, तो यहाँ पर अभी product है, मैंने आज product को दिखाता हूँ. इस टाइप से यहाँ पर product अगर यहाँ पर reaction कर रहा है, तो यहाँ पर product की energy कैसे हो रही है? Higher as compared to a reactant. So that ये वाला जो product होगा, ये होगा आपका unstable. कैसे होगा? Unstable. Because thermodynamic stability versus kinetic stability. Now, we are start with the main portion, that is the mechanism of the ligand displacement. So, what is the ligand displacement reaction? Metal ligand, there is a bonding, that is known as the coordinate bond. If suppose ligand displacement in the metal complexes is said to have been taken place by if one of the provisionally attached ligands got replaced by another ligand, it's a coordination sphere, then this is known as the replacement type of reaction. If suppose previous ligand is replaced by another new ligand, it is known as a replacement reaction. For example, NaNl. This L is the one ligand
where this L is replaced by the E type of ligand, which is a new ligand, and formation of the new complexes. This is the known as what replacement reaction, where the ligand L is the leaving group, the next complexes E is the entering ligand, which is a nucleophile in nature. This should be a nucleophilic in nature. So that this one is also nucleophilic in nature. So that this is nothing but a nucleophilic. You can call it as a nucleophilic substitution reaction. This is known as a nucleophilic substitution reaction, and during this reaction, coordination number of the complexes remains. Coordination complexes are same. Now we are going to discuss the ligand displacement mechanism in case of what octahedral complexes. In octahedral complexes, the replacement of the ligand can occur through a dissociate. There are the two methods, dissociate or associate. Okay, or by an interchange mechanism. There are the three methods. First one is the dissociate, associate, and interchange. It has been observed that most of the ligand displacement reaction takes place through the interchange route rather than purely associate or dissociate. Let's consider the first example, that is a dissociate type of, that is SN1 mechanism. In this mechanism, क्या होता है? सबसे पहले मेटल लिगेंड एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, सो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जो कॉम्प्लेक्सेस का it reduces from 6 to 5. Because we are going to discuss the octahedral complexes, so that the coordination number is on 6. As soon as the one metal and ligand bond is break, the coordination number is decreases. Now the coordination number is 5, so the geometry is also penta-coordinated intermediate complexes. The intermediate form होगा वो कौन सा होगा आपका penta-coordinated. After that, the entering group attacks the intermediates, and the coordination number again gets restored to 6. यहाँ पर आपका जो होगा अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रिटेन हो जाएगा. तो ओवरऑल प्रोसेस को देखते हैं. Na5L, this is the leading group. This process is very slow, so that this is the rate determination step. लिगैंड यहाँ पर जो लीडिंग ग्रुप से बाहर चले जाएगा, आपको यहाँ पर पेंटा कोऑर्डिनेटेड एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलेगा, और फिर यहाँ पर अटैक करेगा नया ग्रुप ई, जिससे वेरी प्रोसेस इज वेरी फास्ट, और यहाँ पर आपको नया कॉम्प्लेक्स मिलेगा और ये आपका 6 ऑक्टाहेड्रल. तो फर्स्ट स्टेप होती है वेरी स्लो होती है, तो सो दैट उसको बोला जाता है रेट डिटरमिनेशन स्टेप. और यहाँ पर आपको क्या पता चलता है, यहाँ पर इस रेट डिटरमिनेशन स्टेप में पता चल रहा है कि दिस रिएक्शन इज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यू लिगैंड के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड नहीं है. This reaction is totally depend upon the concentration of what reactor only, इसके ऊपर ही डिपेंड है. So that this is the SN1 type of reaction. SN1 type of reaction means this concentration एक ही reactor के ऊपर डिपेंड होता है, इसको बोला जाता है SN1. This is the new molecular nucleophilic substitution reaction, that is SN1. This is the pathway. If suppose यहाँ से अगर लिगेंड चला गया, अगेन दिस प्रोसेस इज द स्लो, आपको यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ई फास्ट होगा, तो यहाँ पर अटैक करेगा. दूसरा एक रूट भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर सपोज करें देखो, तो ज्योमेट्री जो है इट इज रिमेन एज इट इज. यहाँ पर भी एल देखो इस पोजीशन पर था, यहाँ पर रिमेन एज इट इज. अगर सपोज एल निकलने के बाद देयर इज चेंजेस इन द ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अगर चेंज होगा, तो यहाँ पर देखो ई जो है, तो ई अगेन फास्ट होगा, तो आपको अगेन ही सेम मिलेगा. तो दैट यहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो रिटेन होती है एज. देयर इज नो चेंज इन द ज्योमेट्री फ्रॉम रिएक्टर टू अ प्रोडक्ट. So this is the remaining of SN1 type of reaction mechanism. So this is the energy profile diagram, coordination diagram we can also call it. This is the reactor. Is the first peak मिला है आपको, this first peak it is for bond break. ठीक है, यहाँ पर आपको जो मिलने वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये जो स्टेप है ये इतना जो पोर्शन है ये है आपका इंटरमीडिएट. यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट फॉर्म है. ओके,
So this is the energy profile diagram of what octahedral metal complexes through a SN1 liquid. अब दूसरा जो देखिए वो है एसोसिएट. पहले जो डिस्कस किया था वो था डिसोसिएट. अभी ये जो है कौन सा है? एसोसिएट. डिसोसिएट में पहले बॉन्ड ब्रेक रखा था. अभी जो देखेंगे क्या होता है. इस मैकेनिज्म में पहले एक बॉन्ड फॉर्म होगा. बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर एंटरिंग द ग्रुप. Therefore, the coordination number of metal complexes यहाँ पर increase होगा from 6 to 7. यहाँ पर increase कितना होगा? From 6 to 7. तो यहाँ पर आपको हेप्टा coordinated intermediate complex form. फिर after that, leaving group जो है dissociate हो जाएगा. And again, complexes having retained their coordination number is 6 and geometry जो है वो restore हो जाएगा. That is octahedral. एक example देखो. Ma5L. पहले P incoming group attach होगा. Again this process is very slow, so that this is a rate determination step. यहाँ पर देखो आपको हेप्टाहेड्रेटेड है, 7 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड का मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ. फिर ये लिविंग ग्रुप चले जाएगा विच इज द प्रोसेस इज वेरी फास्ट. और यहाँ पर आपको अगेन 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेंबर कंपाउंड आपको मिलेगा. अब यहाँ पर देखो SN1 में जो रिएक्शन की वो डिपेंड होती है सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर. But in this case, the rate is depend upon the concentration of both reactant के ऊपर भी डिपेंड है as well as the new ligand जो अटैच हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड है. अगर सपोज इस ligand का concentration अगर वीक है, कम है, तो यहाँ पर प्रोसीजर सामने नहीं जाती है. इससे होता है क्योंकि लिविंग ग्रुप जाएगा ही नहीं जब तक आपका E जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. यहाँ पर टोटली अभी दो स्पीशीज के ऊपर आपकी रिएक्शन डिपेंड है. दैट इज रेट डिपेंड है. सो दैट इज अ बायोमॉलिक्यूल. दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड है, सो दैट इसको कहा जाता है बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन. एंड हेंस इट इज नोन एज SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन. तो क्या बोला जाएगा? SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म. अगेन दिस वन इज द डायग्राम. हेप्टाहेड्रेटेड कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. और आपको फिर लिविंग ग्रुप जाने के बाद यहाँ पर आपको मिला है दैट इज 6 coordination members composed of octahedral complexes through the SN2 reaction mechanism के through. Again, energy profile diagram. यहाँ पर ये वाला यहाँ पर नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है. ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर लिविंग ग्रुप जा रहा है. ये जो पोर्शन है ये है आपका कॉम्प्लेक्स. अभी आपके सिलेबस में जो है वो है एक रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोलिसिस टाइप ऑफ रिएक्शन. तो देखते हैं हाइड्रोलिसिस क्या होता है, किस टाइप से होते हैं. जनरली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. वन इज द एसिड हाइड्रोलिसिस एंड अनदर इज द बेस हाइड्रोलिसिस. नाउ द जनरल स्कीम ऑफ लिगैंड रिप्लेसमेंट. आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? लिगैंड जो है रिप्लेस हो रहा है बाय अदर ग्रुप्स. ओके, इफ सपोज एंटरिंग ग्रुप इज आइदर H2O और OH इन एक्वस सॉल्यूशन, तब इस रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस. ध्यान में रखना, इफ एंटरिंग ग्रुप जो है वो अगर H2O है और OH माइनस अगर है, देन इस रिएक्शन को बोला जाएगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू एक्सट्रीमली वाइड एप्लीकेशंस. ओके, तो इसमें देखेंगे फर्स्ट वन इज द एसिड हाइड्रोलिसिस. The acid hydrolysis or the aqueous reaction may be defined as the reaction in which the aqueous complexes is formed due to the replacement of ligand by a water molecule. Remember this. In case of acid, or it is also known as the aqueous reaction, in this case, the ligand is replaced by what? Water molecule. Ligand is replaced by what? Water molecule. Now, for example, is NH3 and suppose the NH is water. Here, instead of L, there is a water. So this is the hydrolysis reaction. It has been observed that NH3 amine like ethylene diamine or its derivative coordinated to the cobalt 3 plus are displaced very small. Hence, displacement of the ligand other than the ammonia takes place during the course of hydrolysis. Okay. Consider this situation. ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट वेरी स्लो रेट से चलता है. So that अमोनिया छोड़ के अगर आप बाकी कोई लिगेंड्स लेते हो तो वहाँ पर आपको प्रोसेस कैसे मिलेगी? फास्ट मिलेगी. Okay. Now, as the reaction media is the water itself, H2O concentration 55.5 molar remain almost constant, and a change in water concentration cannot be detected at all. Hence, the rate
law cannot be used to predict whether the reaction takes place by associate mechanism or the dissociate pathway. Then SN1 होगा कि SN2 होगा यहाँ से पता नहीं चलता है. But SN1 reaction follow the first order kinetics while the SN2 reaction follow the second order kinetics. However, if the complexing agent is in the excess, remember this. If the complexing agent is in the excess, the SN2 reaction also becomes a pseudo first order reaction. अगर सपोज मेरे पास अगर एक्सेस होगा मेरी तो यहाँ पर जो ऑर्डर जो होती है वो होती है सूडो. सबको पता होगा सूडो ऑर्डर में क्या होता है. इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So again, it is very difficult to find out whether the reaction is SN1 or SN2 type of reaction. But now, experimentally ये प्रूव हो चुका है कि डाइवैलेंट मोनोक्लोरो कॉम्प्लेक्स जो होता है, डाइवैलेंट मोनोक्लोरो कॉम्प्लेक्सेस react much more slower than the monovalent dipolar. ये जो होता है डाइवैलेंट ये स्लो चलता है एज कम्पेयर टू मोनोवैलेंट. इसके दिस इज द मोनोवैलेंट. This is the diagonal. Okay, as compared to this, divalent जो है ये slow चलता है as compared to that is reaction 14 is 1000 times faster than 50. तो यहाँ से क्या पता चलता है कि रिएक्शन जो है वो डिसोसिएट वे से चलता है कि SN1 का. So because the separation of the negatively charged Cl minus is much more difficult from a complex of a high charge density. यहाँ से high charge density होगा तो काफी difficult हो जाएगा. So there are also some other ground evidence which support the dissociate type of mechanism. So that acid hydrolysis जो होगा वो आपका follow करेगा SN1 type का मेथड. दूसरा देखते हैं base hydrolysis. Base hydrolysis में क्या होता है? The ligand जो होगा it is replaced by hydroxyl ion that is OH minus ion. अगर कोई ligand अगर replace होता है OH minus ion से तो उसको बोला जाता है base hydrolysis. But यहाँ पर एक conditions होती है. Base hydrolysis reaction occurs in a solution having the pH is greater than 10. Okay, pH की condition से कितनी होनी चाहिए? It should be greater than 10. तभी आपको यहाँ पर reaction मिल सकती है. Now अभी यहाँ पर भी whether this reaction associate है कि dissociate है ये सब को डिस्कस करने के लिए the value of the rate constant and reaction order must be examined very carefully. The possibility of a simple SN1 mechanism can be ruled out on the basis of the exceptional fast rate reaction at higher pH. यहाँ पर अभी pH dependent reactions होने की वजह से अभी यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आता है कि whether this reaction takes place whether SN1 type of mechanism or SN2 type of mechanism. See, overall experimental और theoretical view से पता चला है the whole process जो होती है it takes place by SN1CD that is a conjugated base type of reaction. Nucleophilic substitution reaction takes with the conjugated base. इसको बोला जाता है substitution nucleophilic unimolecular conjugated base mechanism. आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एसिड होता है और जो अटैक करने वाला न्यू ग्रुप होता है इट इज अ बेस. जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं यहाँ पर देखो आपको किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है. योर NH3/4 यहाँ पर NH3 यहाँ पर 4. तो दिस वन इज द कॉन्जुगेट. ये जो है ये आपका कॉन्जुगेट बेस है. तो दूसरा जो है वो क्या हो सकता है कॉन्जुगेट एसिड. तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस एंड ड्यू टू दिस यहाँ से अभी आपको पता चलेगा कि आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा होगा SN1 दैट इज अ कॉन्जुगेटेड बेस. द कॉन्जुगेटेड बेस एज ऑक्टेट इज मोर लेबर than the original complex and hence undergo again SN1 mechanism that is dissociated by losing the chlorine minus and give the penta-coordinated intermediate. Remember, penta-coordinated intermediate most of the time SN1 type cases dissociate mechanism में है आपको. So this is the base hydrolysis. So remember, base hydrolysis reaction follows the SN1CD type of reaction, whereas the acid hydrolysis follows the simple SN1 type of reaction. So this is the acid hydrolysis and the base hydrolysis. So here the end with the this chapter यहाँ पर आपने डिस्कस किया था what is the meaning of labile what is the meaning of thermal
inert complexes, what is the thermodynamic stability, kinetic stability. इसके बाद ligand displacement relation में we are going to discuss SF1 mechanism, also the SF2 mechanism is also there. Then what is the meaning of acid hydrolysis? When the ligand is replaced by the water molecule is known as acid hydrolysis. When the ligand is replaced by the hydroxyl ion is known as the base hydrolysis. So this is the end with this chapter. Thank you.